everyone, this is 𝐊𝐧𝐸 from GDSC, and today we are joined by a very special alumni of our college. He is a proud graduate from ADGITM and is currently a successful software developer. He is currently working in India's leading ordering and delivery company Swiggy, which also tops the chart in Indian unicorn list. Yes, we are talking about Swiggy. He has also worked previously in George Technology Group and has done internship in various companies like Notes Hub, Digital Product School. GDSC is proud to present Anuj Gupta as the guest of speaker today. Hello, Anuj. Hi Zara, thanks for having me here. Yeah. It's all my pleasure to have you today. So, starting with, how was your day today? So my day was pretty good. It was a little bit hectic. So I was working on some bug fixes and some features which are yet to be released on the Swiggy app. So yeah. Okay, it's great to know. So, personally, the success journey of yours, the steps that you took, inspired us a lot. So, would you like to tell everyone about the story of your success in brief? Okay, sure. So let's talk about my college journey. So in my first year, मैंने basically college के curriculum के साथ I learned basic DSA and learned Java as well. And in my second year I started with Android development because basically क्या था कि मेरे को कॉलेज के टाइम से स्कूल के टाइम से ही था कि मेरे को सीखना है कि एंड्रॉइड एप्स कैसे बनती है. So I started with Android apps in second year. And like I started exploring about Android in 12th only. So I knew कि Android development के लिए I need to learn Java. That's why I learned Java in first year. And second year से I started Android development and made projects. And also I did one internship in second year. And in third year I guess I was little bit inclined towards interview preparation, lead code kind of stuff, and little bit CP. And in parallel I was also doing some development stuff in Android and web. And yeah, towards the end of third year I shifted my focus towards majorly towards interview preparation. And fourth year मेरा entirely was devoted towards internship. So मैंने जोश टेक्नोलॉजी फोर्थ ईयर में ही ज्वाइन कर लिया था. So I was working as an intern in my entire fourth year. Okay, yeah, that's great to know. And trust me, you inspire us as juniors to have a success trajectory like you. So, here's a personal question. सबसे ज्यादा कॉलेज लाइफ के बारे में क्या याद आता है आपको? कॉलेज लाइफ के बारे में आई रिमेम्बर ओनली वन थिंग दैट लाइक मैं काफ़ी सारी सोसाइटीज़ में पार्टिसिपेट करता था. आई वाज इन ऑल ऑफ द टेक सोसाइटीज़ इन आवर कॉलेज. सो आई मिस दैट थिंग. We used to organize events, organize talks, and have some workshops. So I miss them. And apart from that, we also participated in various hackathons and other competitions. So I miss that thing. So, would you like to tell any incident about the various hackathons that you have participated, or one memory that you created with your friends at that time? Yeah, so hackathon to basically are more about memories only. So we participated in few hackathons which were overnight. So we spent a whole night and like हम सब जागे हुए थे पूरी रात और we were building something and fixing bugs and having fun. So yeah, that was those were the good times. Yeah. That's really good to know. So, we there is a famous saying that Rome isn't built in one day, and you weren't a Android developer in one day. You didn't become an Android developer in one day. So, give us the brief story of becoming an Android developer, and what value does it have in your life currently? Okay. So yeah, as I mentioned, I had a dream of learning Android development in my school time only. So मैंने school time में ही I started exploring.
कि हाउ टू मेक एंड्रॉइड एप्स एंड ऑल। सो मेरे को पता था कि एंड्रॉइड एप्स बनाने के लिए वी नीड जावा। सो आई लर्न जावा इन फर्स्ट ईयर एंड आई स्टार्टेड एंड्रॉइड डेवलपमेंट इन सेकेंड ईयर। एंड आई गेस देयर वाज वन इंस्टेंस, लाइक मैंने एंड्रॉइड डेवलपमेंट स्टार्ट करा एंड आई डिडंट नो कि विच फ्लो में मेरे को जाना चाहिए। तो आई वॉज नॉट एबल टू ग्रैस्प थिंग्स एंड अल्टीमेटली मैंने लाइक उसको साइड में ही रख दिया था एंड्रॉइड डेवलपमेंट को। बट देन आई वॉज इन टू सम सोसाइटीज इन कॉलेज, सो आई मेट सम सीनियर देयर एंड ही वॉज ऑल्सो वर्किंग एज एन एंड्रॉइड डेवलपर। सो ही गेव मी सम काइंड ऑफ रोड मैप कि यहाँ से ऐसे ऐसे ये सब चीज़ें सीखो। देन आई स्टार्टेड अगेन एंड्रॉइड डेवलपमेंट इन माई सेकेंड ईयर ओनली। सो या, एंड डेवलपमेंट में बेसिकली क्या होता है कि इट्स नॉट अ लाइक 1 month थिंग और 2 month थिंग। बेसिकली इन्फिनिट लर्निंग होती है। सो यू बिल्ड प्रोजेक्ट्स एंड यू लर्न न्यू थिंग्स, नेक्स्ट डे यू स्टार्ट बिल्डिंग समथिंग न्यू एंड यू गेट टू लर्न समथिंग न्यू। सो या, सेकेंड और थर्ड ईयर ये डेवलप मतलब लर्निंग वाला फेज चलता ही रहा है। एंड अभी भी आई कांट से कि मेरे को सब कुछ आता है एंड्रॉइड में। या Ah, you mentioned that your seniors helped you through your journey. So, a special moment with your senior, you must have a special moment with your seniors. So, what was that? I would really like to know it. स्पेशल मोमेंट तो आई वुड से लाइक वही वाला मोमेंट होगा जिसमें आई मेट अ सीनियर हु वाज आल्सो इनटू एंड्रॉइड डेवलपमेंट एंड उन्होंने मेरे को कुछ कुछ कोर्सेज बताए एंड आल्सो टॉपिक्स की लिस्ट बताई कि इस ऑर्डर में करना चाहिए टॉपिक, और लाइक सम बिगिनर प्रोजेक्ट टू पिक अप अलोंग विद लर्निंग। सो या, दैट वाज द ओनली स्पेशल मोमेंट बिकॉज उसके बाद से मेरा पर्सपेक्टिव चेंज हो गया था काफी ज्यादा डेवलपमेंट के लिए। Would you like to name that senior? आई डोंट थिंक सो। Okay, never mind. So, moving on, you said that DSA, data structures and algorithm, and Android development have been an integral part in your journey. So, more, would you like to stress more about the journey period of learning and when you were demotivated, and what did you steps you did take to get motivated and get back to that journey? या सो लाइक या, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में बेसिकली व्हेनेवर वी आर प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यूज, सो रिज्यूमे में लाइक 2-3 मेन चीज होती है ना। तो वन थिंग इज डीएसए बिकॉज यू नीड टू क्रैक द ऑनलाइन राउंड्स एंड ऑल्सो द इंटरव्यूज। सो डीएसए आना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके रिज्यूमे पे कुछ प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, तो उसके लिए आई चूज एंड्रॉइड डेवलपमेंट। सो डेफिनेटली एंड्रॉइड प्लेड सम इम्पॉर्टेंट रोल इन माई रिज्यूमे। एंड टॉकिंग अबाउट डीएसए, या, सो डीमोटिवेशन तो डेफिनेटली होती है। सो मैंने कई बार लाइक जो फैंग कंपनीज होती है अमेजोन माइक्रोसॉफ्ट इन सब में अप्लाई किया एंड मोस्ट ऑफ द टाइम तो लाइक मेरे पास रिप्लाई ही नहीं आता था, और कई बार अगर आता ही था तो वो रिजेक्शन का ही मेल आता था। बट हाँ, तो मतलब रिजेक्शंस और इससे तो डीमोटिवेशन होती रहती है। बट या, मेरा मेन मेन मोटिव यही था कि ठीक है रिजेक्शंस तो आएंगे बट वी शुड नॉट स्टॉप एंड आई केप्ट लाइक गोइंग फॉरवर्ड एंड नेवर स्टॉप लर्निंग एंड अल्टीमेटली आई गॉट दी सम लाइक टेस्ट लिंक्स एंड जिन कंपनी से मेरे को उस टाइम पे रिजेक्शन मिल आते थे, अब वहाँ उनके एचआर मेरे को खुद कॉन्टेक्ट करते हैं। That's really motivating. So, we have this conventional debate about two things in college life, or when we are going to be a software engineer in the हम्म, process of that. One is that which language should we learn, C++ or Java, or even any other language. And that second debate is WebD versus Android development. What हम्म। are your thoughts on both on the debates? So, talking about the programming language, so in my opinion, if like the person is absolute beginner, I would recommend going with C++. The reason behind is this is C++ में basically we have some concepts like pointers and some other basically क्या होता है कि pointers वगैरह जब हम C++ में पढ़ते हैं तो हमारे basics clear हो जाते हैं। बिकॉज जैसे पाइथन जैसी लैंग्वेज Yes, होती yes. है उसमें क्या होता है कि लाइक बेसिकली एब्स्ट्रैक्शन होती है काफी ज्यादा, तो हमें इंटरनल वर्किंग समझ में नहीं आती है, राइट। और इंटरव्यूज में भी कई बार क्या होता है कि इंटरव्यूज में भी होता है और ऑनलाइन टेस्ट में भी होता है कि हमसे पॉइंटर्स वगैरह के एमसीक्यू वगैरह पूछे जाते हैं।
तो इसीलिए अगर सी प्लस प्लस करते हैं तो वो बेस्ट होगा। बट अगर Okay. किसी को कोई और लैंग्वेज आती है तो आई थिंक दे कैन मूव फॉरवर्ड विद दैट लैंग्वेज एंड लर्न these pointers and other concepts separately. And Okay. yeah, talking about Android and web development, इसमें भी बेसिकली लाइक ये पर्सनल चॉइस होती है। लाइक मेरा क्या था, स्कूल टाइम से मेरे को एंड्रॉइड डेवलपमेंट सीखनी थी, सो इसीलिए आई लर्न एंड्रॉइड डेवलपमेंट। बट अगर क्योंकि क्या है कि एंड्रॉइड डेवलपमेंट में कुछ कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी होते हैं कि आपको लैपटॉप में कॉन्फ़िगरेशन मतलब कैसे कैसे चाहिए, लाइक रैम ज़्यादा चाहिए, प्रोसेसर अच्छा होना चाहिए, ये भी होता है। और एट टाइम्स क्या होता है, एंड्रॉइड डेवलपमेंट थोड़ी ना फ्रस्ट्रेटिंग हो जाती है, बिकॉज उसमें Yes. मतलब हाँ, जैसे बड़े ऐप्स आप बना नहीं सकते हो, और छोटे ऐप्स कई बार बोरिंग हो जाते हैं, मतलब हो जाता है कभी-कभी। बट अगर कोई ऐसा बंदा है जिसको बिल्कुल भी कुछ नहीं पता कि उसको वेब करना है या एंड्रॉइड करना है, तो आई वुड से कि वेब डेवलपमेंट करनी चाहिए। बिकॉज़ वेब तो मतलब इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है और हर जगह यूज़ होती ही होती है। जिन कंपनीज़ की मतलब मेजर बिज़नेस एंड्रॉइड पे है, तो उनका भी वेब पे तो होता ही है। तो मतलब वेब तो हर जगह यूज़ होता है। बट एंड्रॉइड का ये है कि वो यूज़ केस स्पेसिफिक है। Okay. So that was very informative. Moving on, here's a personal question again. How did you know that you had interest in Android development? Like you said that you had interest since 12, but how did that interest develop? सो बेसिकली मतलब ऐसा था कि 11th-12th में आई हैड सी प्लस प्लस इन माय सब्जेक्ट। सो वहाँ पर Okay, मैंने बेसिक प्रोग्रामिंग की मतलब स्टार्टिंग मेरी 11th-12th में हुई थी। सो जब मैंने प्रोग्रामिंग सीखी, देन आई गॉट क्यूरियस कि ये एंड्रॉइड ऐप्स भी प्रोग्राम ही किए जाते हैं, तो वो कैसे बनते हैं? तो या that why question came and you develop interest in the राइट, राइट, Android development. Yeah. राइट। Okay. So you mentioned that you have made projects. What would you like to tell more about those projects that added value to your resume? या श्योर। तो प्रोजेक्ट्स में लाइक आई मेंशन्ड कि लाइक इन माय सेकंड ईयर मैंने एंड्रॉइड डेवलपमेंट करी थी, बट थर्ड ईयर में आई डिड बैकएंड एज़ वेल, राइट? सो Okay. या बेसिकली बैकएंड एंड फ्रंट एंड भी थोड़ा-थोड़ा किया था, तो बेसिकली फुल स्टैक ही था वो। सो आई मेड सम गुड प्रोजेक्ट्स कंबाइनिंग बोथ ऑफ देम। सो आई मेड अ क्लोन ऑफ आवर फेसबुक लाइक थिंग, मतलब फेसबुक का ही क्लोन टाइप था वो। उसमें बैकएंड भी मैंने खुद से बनाया था। Okay. या Okay. Okay. सो इट हैड एंड्रॉइड ऐप एंड वेब पे भी फ्रंट एंड भी था एंड बैक एंड भी था। सो तीनों चीज़ें मैंने बनाई थी, तो काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट हो गया था ये। सो इट गॉट अ Yes. लॉट ऑफ वेटेज एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई आल्सो हैड सम स्मॉल एंड्रॉइड ऐप्स एज़ वेल। या Would you like to tell us about those apps? या ऐप्स में तो जैसे मैंने बेसिक बिगिनर, सबसे पहले मैंने एक सब लोग बनाते हैं टू डू ऐप, नोट्स ऐप बनाई थी। बट नोट्स ऐप को मैंने थोड़ा बाद में जाके मैंने उसको काफ़ी ज़्यादा एडवांस कर दिया था, लाइक उसमें भी मैंने अपना बैकएंड खुद से बनाया था। सो वो भी एक काफ़ी अच्छी Okay. बन गई थी एंड उसको मैंने मतलब जीमेल गूगल ऑथेंटिकेशन वगैरह लिंक कर दिया था, तो वो काफ़ी बढ़िया ऐप हो गई थी। एक वो हो गई थी, और वेदर ऐप भी बनाई थी मैंने। और उसके अलावा तो मेजर प्रोजेक्ट मेरा यही था, जो सोशल मीडिया ऐप बनाई थी मैंने क्लोन। Okay. That's great to know. Uh, we talked about your internships in the intro. So what were your stepping steps that you took to go get those internships? सो इंटर्नशिप के लिए बेसिकली आई वुड से कि आई हैड अ लॉट ऑफ कनेक्शंस एंड मैं काफ़ी ज़्यादा कम्युनिकेट करता था। लाइक आई वाज इनटू मैनी सोसाइटीज़ एंड मैं सीनियर से काफ़ी ज़्यादा बातें करता था। सो नोट्सअप के जो मतलब फाउंडर थे, वो बेसिकली हमारे कॉलेज के ही सीनियर थे। देन आई गॉट इनटू हिज कॉन्टैक्ट एंड आई स्टार्टेड वर्किंग विद हिम। Okay. So we have talked about internships, resumes, and everything. The basic gist of these questions is that I want to know that how did you manage time? Like, what were your time? What was your timetable at that time that you managed all of these things in very efficiently? फ्रैंकली स्पीकिंग मतलब आई एम वेरी बैड एट फॉलोइंग टाइम टेबल्स। सो मेरा कोई टाइम टेबल तो था ही नहीं। बेसिकली क्या होता था कि
आई यूज टू मेक सम प्रायोरिटी लिस्ट कि डेली डेली टास्क की प्रायोरिटी लिस्ट कि आज ये वाला काम मेरे को प्रायोरिटी पे करना है। तो वो फिर मैं कर ही लेता था, चाहे मतलब मेरे को रात में जागना पड़े या लेट तक करना पड़े या सुबह जल्दी उठ के करना पड़े। तो ऐसे आई यूज टू डू, मतलब प्रायोरिटी लिस्ट बनाता था, टाइम टेबल तो नहीं फॉलो करता था कोई। Okay. So college life, as we all know, is very special in the whole life we live. So what is your special memory with your friends? कॉलेज तो बिकॉज मतलब मैं काफी ज्यादा इन सब चीजों पे ध्यान दे रहा था, तो मैं कॉलेज तो कम ही गया था। बट मेजर Okay. मेमोरीज तो मेरी मतलब सोसाइटीज में ही रही हैं। मतलब ये सब लर्निंग्स लाइक, मतलब IEEE में जैसे वी यूज टू हैव सम सेशंस ऑन एंड्रॉइड डेवलपमेंट, सम सेशंस ऑन IoT, सो उसमें वी यूज टू Okay. हैव फन। सो दीज वर द ओनली मेमोरीज आई हैव। Everyone does one thing that is like the correct step in their life to achieve success. What was that step in your life? करेक्ट स्टेप, सो आई वुड से कि मैंने लाइक I got to know about things at right time. So मतलब not the right time but not very late as well। मतलब क्या हुआ था, जैसे मेरे को DSA वगैरह का सेकंड ईयर में ही पता चल गया था। जैसे आज मतलब ऑल्दो आजकल तो लोग बच्चों को फर्स्ट ईयर में पता चल जाता है, बट मेरे को सेकंड ईयर में पता चल गया था, जो कि ज्यादा लेट नहीं था। मतलब कई बार तो थर्ड ईयर में पता चलता है लोगों को। तो मेरे को उन सब चीजों का आइडिया लग गया था कि इंटरव्यू प्रिपरेशन कैसे होती है, इंटरव्यू में क्या क्या पूछते हैं। तो इसीलिए मेरा फोकस थोड़ा उस टाइप से बन गया था कि मेरे को ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाने हैं और DSA प्रिपेयर करना है, ये सब करना है। Okay. So we all get motivated through some quotes in our life. Like for mine, if I share, is a very famous quote by Muhammad Ali. It says, "As suffer today and live your rest of your life as a champion." What is your quote that motivates you? या तो यहाँ पर एक काफी इंपॉर्टेंट कोट है जो 12th में मेरे फिजिक्स टीचर थे, वो बोलते थे मेरे को कि देखो अनुज, मतलब लाइफ के एक फेज में तो तुम्हें हार्डवर्क करना पड़ेगा, तो बेटर होगा कि वो अर्ली फेज में कर लो। बिकॉज ये वाले फेज स्मॉल होते हैं, और फिर अगर अर्ली फेज में अगर तुमने हार्डवर्क कर लिया तो उसके आगे के सारे फेजेस ईजी हो जाते हैं। तो मतलब वो एग्जांपल ऐसे देते थे कि जैसे सपोज अगर तुमने 11th 12th में अभी सही से हार्डवर्क कर लिया तो तुम्हें एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, तो उसके आगे की लाइफ तुम्हारी पूरी ईजी हो जाएगी। बट अगर तुमने अभी हार्डवर्क नहीं किया तो फिर तुम्हें कॉलेज में जाके 4 साल हार्डवर्क करना पड़ेगा, और फिर तुम्हारी सही से जॉब लग सकती है। बट अगर तुमने तब भी हार्डवर्क नहीं किया, फिर तुम्हें जॉब के टाइम पे हार्डवर्क करना पड़ेगा। तो मतलब वो बेसिकली टाइम बढ़ता जाता है। तो That's दिस थिंग मोटिवेटेड मी। that's very true, and it's somehow linked to my quote also. या Something that daily motivates you to get out of bed and do the hard level of hard work that you do every day on daily basis. लाइक इन करंट टाइम या फिर कॉलेज वाला टाइम? You can tell in both times. कॉलेज वाले टाइम पर तो आई वुड से कि आई हैड अ ड्रीम ऑफ लाइक, क्योंकि मेरा जेई में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था, तो आई वांटेड टू गेट इनटू सम गुड कंपनी, सो दैट वाज द मोटिवेशन। और अभी के टाइम पर तो मेनली लाइक क्रिएटिंग इम्पैक्ट, लाइक बिल्डिंग न्यू थिंग्स, सो दैट लाइक कल को मैं ऐसे बोल सकूं किसी को कि स्विगी की ऐप पे आपने ये वाला फीचर यूज किया, ये मैंने बनाया है। सो दैट इज द मोटिवेशन। Okay. या So, how would you describe your college life in 3 words? कॉलेज लाइफ इन 3 words, I would say amazing and filled with opportunities. Yeah, And third word? filled with opportunities, amazing and interesting कह सकते हैं। Okay. So, how has pandemic affected your life goals? Would you like to tell us? पैंडेमिक वैसे इन जनरल पैंडेमिक से ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ है मतलब लाइफ गोल्स पर। लाइफ गोल तो मतलब मेन वही था कि गेटिंग अ गुड जॉब। सो पैंडेमिक से बल्कि एक प्लस पॉइंट ही हुआ था उस टाइम पर कि मतलब ज़्यादा टाइम मिल गया था पढ़ने के लिए। एंड मतलब सारी चीजें ऑनलाइन हो रही थी, तो मतलब कहीं जाना भी नहीं था। और मतलब पढ़ने के लिए और डेवलपमेंट वगैरह के लिए सब सब चीजों के लिए ज्यादा टाइम मिला है। सो मतलब पॉजिटिव इफेक्ट हुआ है। So, you would prefer students studying online rather than offline?
नहीं ये भी नहीं कह सकते, बट मतलब ऑफलाइन डेफिनेटली बेटर होता है, बिकॉज मतलब सोशल इंटरेक्शन होती है और टीम बिल्डिंग वगैरह होती है, काफी सारे फ्रेंड्स बनते हैं। और मतलब ऑनलाइन होने की वजह से वो हैकाथॉन्स वाला पार्ट वो सब भी मिस हो जाता है, काफी सारा फन मिस हो जाता है। हम्म। मतलब होना तो ऑफलाइन ही चाहिए, बट आई वुड से कि पैंडेमिक का भी मतलब मैंने मतलब पॉजिटिव वे में मतलब उसका बेनिफिट लिया है। मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं हुआ मेरा, मतलब पैंडेमिक से कुछ, ये कह सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। सो वी ऑल हैव वन प्राउड मोमेंट इन आवर लाइफ। सो व्हाट वाज योर प्राउडेस्ट मोमेंट? प्राउड मोमेंट तो आई वुड से लाइक जब आई गॉट सेलेक्टेड इन जोश टेक्नोलॉजी ग्रुप। सो मतलब फर्स्ट जॉब थी वो। बेसिकली पीक टाइम चल रहा था पैंडेमिक का, तो वैसे भी जॉब्स कम थी। एंड उस टाइम पर कॉलेज से प्लेसमेंट होना, और वो भी डिसेंट पैकेज, एंड दैट टू मतलब दो बंदे सेलेक्ट हुए थे बस कॉलेज से, एंड उसमें एक मैं था। ओके। सो या दैट वाज द प्राउडेस्ट मोमेंट। Okay. And one mandatory course that you would like every student to learn across all the branches of your career. आई वुड से बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग और बेसिक डीएसए शुड बी मैंडेटरी फॉर ऑल द ब्रांचेस। मतलब उससे थोड़ा बहुत लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग वगैरह आ जाती है। एंड आजकल तो लाइक मैकेनिकल हो चाहे कोई, मतलब हर ब्रांच में कुछ ना कुछ ऑटोमेशन तो रिक्वायर्ड होता ही है। तो बेसिक Yes, प्रोग्रामिंग आनी yes. चाहिए, तो दैट शुड बी सम मैंडेटरी सब्जेक्ट। Okay. So it has been a really good conversation with you, and I got have got to learn multiple things about the steps that I need to take care of, and the viewers, students who will see and need to take care of. So, on an ending note, what would you like to give some message to all the juniors of your college? Yeah, sure. So my main main message will be कि मतलब I know कि you are not into very good college, but you should keep working hard. Some one day or another, your hard work will finally pay off, and you will be very happy that you didn't stop at that time. So that should be the only motivation from my side. Thank you so much, Anuj, for taking out time for this podcast. And may you achieve more and more success in your life. And I personally believe that seniors like you don't even have sky as the limit to the success. Signing off, friends, for now, and hoping to see you in the upcoming episodes. Till then, keep smiling, keep learning, and keep growing.